Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Hello guys, welcome back to Genshin Impact. Good morning fam. You Mr. Stone Gaming, welcome. भाई मेरे को कोई ना, लेकिन अभी गेम चालू होती है कोई जोंगली वाला चाहिए. Everyone's जोंगली वाला है laundry कोई is still on the line. May I be excused to fetch it in? Just sharpen my spear. Marcus Live, hello bro, welcome to the chat. यार इसको नहीं ले सकता मैं. मिशन चल रहा है, मिशन कुछ अभी नहीं चल रहा है. मैंने अभी स्टोरी खत्म किया ना, तो ये जोंगली खड़ा हुआ है सामने. अभी अपन को कमीशन करना है, और कमीशन करके मैं दूसरा वो निकालूंगा कि अपना, तो मैं जोंगली का सेकंड स्टोरी खोलता हूँ, और इसका सेकंड स्टोरी खुल जाएगा ना, तो क्या होएगा,
अजदाहा को माने जा सकते हैं फिर अपन। नेम चेंज कर दिया। ओह नाइस, वेलकम टू द चैट मार्कस। चलो भाई अपन चलते हैं, पहले अपने कमीशंस कर लेते हैं। The rain has stopped. Come with me. Let's pick some matsutake. स्टोन फॉरेस्ट, यप। Freeze! Wind, hear me. Teamwork is dreamwork. Ha, cool it! Oh, so sorry. Dodge this! Ah! Freeze! Out of the frying pan. Full and splash. Cool it! इजी पीजी। जल्दी से सारे कमीशन कर लेता हूँ भाई, फिर अपने को जोंगली का स्टोरी चालू करना है। जोंगली का स्टोरी भाई मजा आने वाला है। हाँ जो दिया तुम तो, अरे 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 अरे। वो कहाँ चला गया इसीलिए। Quite the find. प्लेस करना वो भी दिख गया है मेरे को, लेकिन वही नहीं दिख रही है जी। भाई आज जोंगली का स्टोरी करेंगे और आज अजदा को मार के आएंगे। What's the hurry? What's the hurry? हाँ भाई, जिंदगी में दो चीजों पर भरोसा मत करना, एक प्यार और दूसरा रिश्तेदार। क्योंकि रिश्तेदार आपकी तरक्की देखकर जलते हैं और प्यार आपकी तरक्की पर आपसे प्यार करता है। अरे क्या बात है। Dodge this! This moment will be frozen.
What's the freak? Don't push your luck. भाई रुक जा बे। Freeze. ओह नाइस, बहुत हार्ड। Dodge this. Let's light it up. रिइंफोर्समेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं भाई? तो वेट कर रहा हूँ। ओ भाई 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 भाई। Wait, hear me. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Oh, so sorry. Ah! Freeze. Ah! Let's light it up. क्या भाई, हो ही नहीं रहा भाई इन लोग से। नेक्स्ट किधर है? स्प्रिंगवेल। चलो Freeze. Barbados, guide us. Everybody stand back. Oh, that's gonna hurt in the morning. Yeah. Why do they never miss? हेलो सर, अरे डेथमैन हैप्पी बर्थडे, वेलकम टू द चैट। गाइस डेथमैन हैप्पी बर्थडे कर दो एक बार चैट पे। आज डेथमैन का बर्थडे है। लास्ट वाला कहाँ पर है भाई? ये रहा। गो अच्छा, ऐसे मेरे को जाने का टेलीपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। अरे 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 सर,
हाँ तो सर बताओ पार्टी कितने बजे है? Off we go. एक बजे आ जाना मेरे घर, बाकी सब बात चैट पे बात करते हैं आप लोग। जरूर जरूर। चलो गाइस हमें 1 बजे तक दर्शन के घर जाना है, तो आज का सीन 12 What साढ़े a 12 तक ही pleasant चलेगा। surprise. अरे ये क्या ले भाई। हाँ आओ ना, इधर ही आओ। अभी लोग देख नहीं रहे कि इग्नोर कर रहे हैं, मतलब इतनी इज्जत रहेगी बस। वेरी गुड। Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Huh. Adventure time. Huh? Don't stand too close to me. Get out of here. हाय। I'm going in. Off we go. Adventure time. Everybody stand back. Cool it. Ha. This moment will be frozen in time. You're toast. इजी। चलो भाई, तो हमारे आज के कमीशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स कलेक्ट और कमीशन रिवॉर्ड। और कमीशन रिवॉर्ड के साथ साथ में हम एक्सपीडिशन भी लेंगे। एडवेंचर रैंक का रिवॉर्ड मैंने ले लिया था भाई। एडवेंचर रैंक तुम्हारे भाई की 42 हो चुकी है। देखो भाई जल्दी से 45 आने वाली है, फिर आर्टिफैक्ट ग्राइंड करेंगे। Ad Astra. Thank you for नाइस। Ad Astra. 20 घंटा बोला ना। चलो भाई फाइनली लेट्स अनलॉक। अरे की लेना रह गया ना, वही मैं बोलूँ भाई, ऐसे कैसे अनलॉक करेंगे। बूम। चलो जोंगली का स्टोरी अनलॉक कर चुके गाइस अपन। और जोंगली का स्टोरी की तरह है, एक सेकंड, स्टोरी आर्कन को है, स्टोरी ये रहे। मैं जाऊंगा भाई सबसे पहले अब जोंगली का स्टोरी कंप्लीट करने, ठीक है। उसके बाद भाई आज अपने पास देखो रेजिन कितना पड़ा है, पूरा 160 का 160 भरा पड़ा है, ठीक है। इसको भाई अपन आज यूज करेंगे, बॉस मारेंगे बहुत सारे। सबसे पहले उसी को मार के आएंगे अपन जिसका नाम है अजदाहा। वो भी बॉस है, वो भी वीकली बॉस है, बॉस नहीं है, वीकली बॉस है।
It's time to move on. We shouldn't stay here. गाइस वेट करना 2 मिनट। I do hope the Knights of Favonius are all working hard. आपको बताइए। यहाँ पर एक डोमेन आ जाएगा, यही है ना? इधर पे एक डोमेन बता रहे हैं। ओके ठीक है भाई। आपको एक डोमेन मिलेगा जहाँ पर हमें अजदहा मिल जाएगा। मेरे को ये स्टोरी क्वेस्ट कंप्लीट करना है बेसिकली। What should I try this time? ओके है ना भाई। Hi, Catherine. It's us. Any new commissions? As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Liyue Harbor. He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. What is it we have to do exactly? I believe you'll be looking for workers. Ooh, looking for people? Awesome! We're good at that! I have no reason to doubt your abilities. I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. Error. चेक कर लो जरा भाई। या बहुत बढ़िया। It's time to move on. We shouldn't stay here.
ये ज्यादा नहीं चाहिए क्या? नहीं है। अंकल डाई, अंकल डाई, हेलो डाई। Hey, are you Uncle Dai? I am indeed. Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the guild. Huh? How could you... By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Right again! You're pretty perceptive! In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Di can see what you're made of from a long way off. Alright, my assistant should be arriving soon, पीछे so साइड पड़ा let's हुआ just है। wait here a moment. Woo woo! That's why we're here! Now there's someone else taking a cut? Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. So there is someone else! जोंगली Do you think we're not up to the job? It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. Last time I checked, adventurers weren't experts in जोंगली आएगा शायद से साथ appraisal में। or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. I'd go as far to say that there's not a soul on Tevat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his caliber. You're a fool if you think you found Tevat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Tevat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. आ गया। Ha ha! Didn't expect that, did you? Wait here, we'll go fetch him. I bet Zhang Li is listening to the storyteller. Let's head over. In our last tale, Rex Lapis. Zhang Li, there you are! Oh. Here for a few tales? I didn't know you two were connoisseurs. Oh, no, we're here for you! Do you have time? Ah, something I'm rarely short of. We need someone who understands geology and ore. Someone who understands geology and ore. Take a look around. Is there anyone in Tevat more qualified? The requester claims to have enlisted Tevat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no. It's just... Uncle Dai doesn't know what he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. I see. Well then, it will be my pleasure to accompany you. Really? But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Stop being so modest, Young Li. Well, we got
this must be the friend you spoke of? Yep. Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Let's not get ahead of ourselves. Still, I do have a claim to some experience in this field. Uh-huh, so you say. Wait till my guy gets here, then we'll see. It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourselves. Is this the place? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kun-jun. Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... Huh? Wangsheng Funeral Parlor's consultant. Mr. Zhongli. I've heard about you. They say you're a man of Hello, great guys. knowledge and कौन है many भाई? talents. और I had no darling bro, idea I'd be meeting you in welcome. person today. I'm Welcome, sure I Phoenix भाई. recognize you. चल Have you चल been at the भाई parlor? भाई StARk खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. Uncle Dai, आज aren't StARk you को gonna मार के test आएंगे. them? अभी कमीशन कंप्लीट किया. Huh? अब जोंगली का I स्टोरी मोड wouldn't कर know रहा where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhongli wins, he's the assistant. If Zhongli loses, never mind. Zhongli won't lose. A contest? Why, it would be my pleasure. I admire your enthusiasm, good sir. I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. I'm just saying it like I see it. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. So you're an appraiser, Mr. Kun-jun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. Huh? How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhongli, what do you make of this rock? A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not mistaken, this is a rough gem from another nation. Ah, a keen eye. It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. Remarkable! This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover industrial remnant. They had no inkling of the treasure that lay within. Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Now that's a rare treasure. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own 2 eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all, we haven't even seen what's inside yet. Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. But
yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay within? I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. क्या स्टोरी वॉच कर रहे हो जोंगले का? I hope you didn't mind me flaunting बस my मारेंगे ना फिर आज। experience, Mr. Kunjun. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. भाई I hope 42 you हो will गया accept यार, my 45 हो जाएगा तो मोटो Uncle 2-3 Dai, दिन it में ही हो would जाएगा be a अभी। mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the रुको भाई, trade. आर्टिफैक्ट You won't निकालें। come across another of his caliber in your lifetime. Very well. There is strength in numbers, after all. टेंशन क्यों ले रहे हो? Everyone, follow me to the chasm. There are men counting on you to find them. This is where the incident occurred. 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, I led a team around the entire mine, but found no trace. That's when I decided to enlist help. So 4 miners had disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Underground, overground, we left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy young men just vanish into the bedrock? We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clues, let me know straight away. So strange. How could the 4 of them just suddenly disappear? Did they run away from something? Let's look around first and see if we can find any... Over here! What's this? A pile of shirts, some trousers... A few everyday items. They must belong to Uncle Dai and his men. 1, 2, 3, 4... Huh, that seems right. 10 shirts, 10 pairs of trousers. These must be spares, right? Look, Uncle Dai's clothes are identical. The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. हेलो There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some tool belts. स्टार्क की वोट थोड़ी बोला भाई. तो Items for washing One one's word, face beloved. before the dawn shift. Mining equipment. ठीक है भाई। So, they didn't take any supplies. Correct. हेलो Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. They had time to take their tools, but not their everyday items? Curious. Huh. Why would someone set
off with their tools, but leave their luggage behind? One, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or two, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. Oh. It's certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. If they didn't leave, maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Dai know. Kunjun, what do you have there? Oh, right on time. Did you find anything? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues. Or, what does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Okay. Looks like he's concentrating really hard. What's he up to? I see 4 men following someone out of the mine. It looks like a child. A child? What's a child doing in a mine? I'm not sure. Also, how did you see anything exactly? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. I can perceive the memories of ore. Huh? Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and boom, it just happens? Good morning, Ayush. Good I've morning. always Welcome sensed to the that chat. ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. Amazing! So you can find out everything that ever happened there. It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Stone seeing. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kunjun. Okay. I'm glad I can be of assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. North. Another clue for Uncle Dai. Let's make a note of it. चलो अरे तो उसके पास वापस जाके आना क्या अरे यार Excuse me. अच्छा ये आसपास का वर्कर Are है you कोई one of the workers here? Ah, yes, yes. You must be here about the disappearance. Please, find them if you can. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. I stayed behind with the other 4. After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them and suddenly they'd vanished. Maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter.
Perhaps an accident occurred on site. Ugh, what a scary thought. An on-site accident. We should note that down too. Found some clues. Time to report back to Uncle Di. You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This suggests that your men didn't leave of their own accord, but were forced to. Forced to? But who would kidnap miners? Who indeed? Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Could someone have entered the site and simply walked away with him? This leads me to my third point. Mr. Kun-jun here made good use of his, expert techniques to arrive at a conclusion. It was a child that took your men away. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over to the mine. Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the ruins. North. Right. I'll rally my men and head in pursuit. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might be able to catch them. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground by now. You're right. New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and see if we can come up with anything. In the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Agreed. All right. Me and my men will get going. So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. Correct. But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? Wait. I believe we're missing someone. Huh? Oh yeah! Where's Kunjun? Paimon and Betsy's still investigating. Let's go find him. Kunjun, what are you searching for? We're all out of clues. Let's get going. Apologies. I'm conducting a quick search for my own benefit. I'm looking for a precious stone known as Dragonfall. Dragonfall? Dragonfall is often used in forging. What use do you have for it? I don't know. I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. I've been feeling very absent lately. Name and address aside, I'm having trouble remembering things. In fact, I've been feeling extremely anxious, as if there's something I've forgotten to finish. It's an unpleasant sensation. Oh, Paimon knows that feeling. When you know you've forgotten something, but you can't remember exactly what it is. I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering,
That day at the market, I overheard a conversation while I was buying something. They mentioned Dragonfall. It sounded so familiar to me, as if whatever it was I had to do was linked to that stone. So, I decided to look for some. Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look for this stone. Really? Oh, thank you, Mr. Zhengli. You're too kind. Think nothing of it. Shouldn't we get going? Heading north from the chasm, we'll reach Lingju Pass. If this is indeed the path they chose, there will be traces. Great! Let's have a look. Wait, there are tracks here. These must have been left by the miners. Let us make our way to the end of Lingju Pass. If there are no footprints there, it would suggest that the miners are still within the pass itself. However, if we find new tracks, we can follow them wherever they may lead. हेलो। अरे मैं कह रहा था एक एक्स्ट्रा जियोकुलस होता है पूरे गेम में। कहाँ पे? अरे वो एक वहाँ पे मेरे को दिखा था, पता है, अभी मैं लेके नहीं आ पाया उसको। नहीं नहीं, मतलब इन टोटल ना रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एक और एक्स्ट्रा होता है, मेरे को कल मिला एक और। अच्छा, जो मेरे मैं को टावर यहाँ को वाला ढूंढते। चाहिए था एक। कहाँ पे गया था मैं अभी? इधर कहीं पे तो था मैं, भगवान ही जाने कहाँ पे गया था। हाँ, इधर ये देखो मार्क किया ना मैंने। इधर इधर एकदम टॉप पे है वो, उसको ले नहीं पाया मैं। मैं तो सैनिटरी रिपोर्ट कर रहा था अभी। अभी लेवल 2 का था ट्रस्ट रैंक, 4 कर दिया सीधा। वाटर्स पड़ी थी बहुत सारी, फर्निशिंग वगैरह बना दी। लेकिन हाँ भाई, 150 लेकिन तो अभी यूज करेंगे ना भाई, दाग को मारेंगे। कंप्लीट 15 डोमेन चैलेंज बाकी है। एयरलाइन डिपॉजिट बाद में करूँगा। तुम्हें लॉन्गली मिलेगा वैसे, पता है, एज डा मारने के लिए। मतलब फॉर अ व्हाइल एज डा मिलता, वो मिलता है, वो तो लॉन्गली अभी मिलता है मैंने ट्रायल के। दो वो थे ना इसके, एक तो किया मैंने, तो भी खेला लॉन्गली से। दो हाँ हाँ चैप्टर है वही ना, कह रहा पहले चैप्टर तो खत्म कर दिया मैंने, अभी रात में खेला। Hey, 4 बजे उठा footprints! तब खेला। It would appear that they made their way through Lingju Pass and kept moving. If we follow their footprints, we should be able to find where they went. तो कोशिश कर रहा हूँ जितना खिंच जाए टी पॉट उतना खींच दूँ, उसके बाद देखी जाएगी। टी पॉट से रेजन निकल जाता, फ्रेजाइल रेजन और बुक्स वगैरह भी। वाओ, एरिया अनलॉक हो गया।
ये उठ गया क्या? अच्छा वो नीचे आ गया। यार इलेक्ट्रो टैंक नहीं रखा। Nice and spicy. Oh no, the footprints end here. We should inquire with anyone nearby. If the miners came through here, they may well have seen them. Wind, hear me. Bubba, get them. Cool it! To frostbite. Freeze! I'm going in. Let's light it up. Why do they never miss? Off we go. Dodge this! Cool it! Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Dodge this! Oh, I'm so sorry. अरे गलत टाइम पे किया। Don't push your luck. Ah! Freeze! Adventure. Right, man, into the fire. Hey-ya! Dodge this! Let's light it up. Freeze! This one will be frozen in time. I'm going in. Let's light it up. Off we go. I swear by my sword. Go as one. भाई इसको एक को अकेले को मारने में कितनी मेहनत लगती है। टाइम तो लगाया काफी।
Hello Derek, welcome to the The chat. miner. क्या Let's लग try रहा है? someone else. Hello, have you seen any miners nearby? About Is this 150 furniture in a single forum? layout. Stop bothering me. Can't you? Jeez, look, वो whatever. जाएगा अपन किचन हटा के फ्लोर स्टफ हो अरे यार ये तो श्राइन की लोकेशन बताओ यार Hey there, seen any miners? यार कितना है अभी? 42 है bro. It must have been about 4 or 5 days ago. There were a few men who came through here carrying baskets and picks. I guess that could have been them. Yeah, that's them! 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd anticipated. Traversing the geography of Lingju Pass must have held them up. It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And there was a child staggering in front of them. ये उस बच्चे को फॉलो कर रहे थे. This child. एक तो एक बॉट चुप क्यों है Did you see what they look like? I caught a glimpse. Blue hair, short. हैवी है I think it was a girl. She wasn't smiling. In fact, she कौन looked बैठा very है? serious. डार्लिंग भाई म्यूट करके बैठो. वही तो हाँ, ये And पता नहीं कब से they पके took जा this रहे हैं. फिर road? बोले भाई मेरा म्यूट Yes, था, पता ही नहीं they मुझे. followed it straight from here. Let's go after them. Let's go after them. अरे यहाँ पे मेरे को एक प्रीशियस जेट दिख रहा था, पहले इसको लेके जाऊंगा मैं. नहीं, मैं इसको बाद में लेने आ जाऊंगा. छोड़ो भाई, वाटर कैरेक्टर नहीं निकाल रहा मैं. ये मेरे राइट में ना. अरे मैं रुक ही नहीं रहा भाई. करते रहो भाई, तुम जो करना है. Adventure time. More footprints. There's a person over there. Help! Please save me! Is that one of the people we're looking for? Oh, कहाँ जा रहा है? rescue first. Ask questions later. Cool it. Don't get frostbite. No escape. Boba, get them! Can't run from death. हाँ, कोई भाग भी नहीं रहा भाई.
भाई इनको किससे मारूं मैं? इसको जियो चाहिए ना इसके लिए तो। पार्टी चेंजरी कर दे बहुत बाय 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 बाय। Greet me. Wind, hear me. Dodge this. Oh, so sorry. Freeze. Off we go. Everybody stand back. कोई तो आया और कोई तो गया, कोई तो फिर से आया। हाँ पहले आवाज नहीं आती थी, तो 3-4 बार म्यूट बोला। करे बैठे थे भाई। अरे नहीं अनम्यूट, जब तुम लोग कह रहे थे कि म्यूट करने को, उससे पहले भी कर दो उसके बाद में नहीं, ठीक हो गया। मैं फोन रिस्टार्ट करने गया। Adventure time. Let's light it up. एक बार ईयरफोन रीस्टार्ट कर जाता सही रहता। नहीं ईयरफोन नहीं सुनो। वही बेटी देता मोस्टली कॉल सेटिंग वाला रहता है। अरे तो इसमें तो ऑप्शन होता है ना माइक स्विच का, मैंने वो भी कर रखा था। डिस्कॉर्ड का ही कुछ भी था। अबे वो नहीं होता तेरे सैनिटरी पॉट में स्किप करना वाला होता है, बॉटल की होती है। डेली 5 डाल सकते थे, मैं देख कर दिए पता नहीं। 30 पड़े थे मेरे पे इन टोटल, तो मैंने यूज कर दिए सारे। लेवल 2 से सीधा लेवल 5 हो गया। बेस्ट फ्रेंड कहाँ भाग रहे हो चाचा, रुको। हाँ इधर आओ, तुम्हारी गोदी तोड़े। कैसे मार रहे हो भाई? पेले भाई कौन भाई वो चूहा सा होता है ना, दौड़ता रहता है। Those monsters were so aggressive. My name is Wanyu. ये I भाई belong to जहाँ मारने Liyue निकल गए। Shangyu Hall. I head up our human culture and civilization research. जोंगली का स्टोरी बस कर रहे थे ना? Sure you're not a minor? हाँ खा लूंगा बट एक ही A minor? चावल पड़े हैं बच्चे। नहीं मेरे को कुछ नहीं आते, मैंने चावल खा लिए थे। बहुत तेज है। Fellas carrying mining equipment. I think I saw those people. Really? Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. About halfway there, I came across some people. A few men and a child. I was in a hurry. I didn't get a good look. I'm afraid I'm not even sure what they looked like. Apologies. I think that's all we needed to hear. Thank you. I hope it's useful to you. I'd better get going. There's a conference I need to attend. Again, thank you all for your help. According to the scholar, the miners were heading for Nantianmen. Can we be absolutely sure that it was the men that we're looking for? A child with a group of adults. Sounds pretty close to Paimon. What? Hey, perhaps that rock over there can tell us more. Aha! Paimon nearly forgot about our secret weapon. It looks promising. I'll do my best.
It's the same group, all right. They followed this road. Mr. Kunjun, your stone seeing is something I won't forget in a hurry. I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. But praise from Mr. Zhongli is high praise indeed. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. You think so? I guess it's been a worthwhile trip then. It feels like we're cracking a criminal case. It's a lot of fun. Be that as it may, we would do well to keep our guards high. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly day and night, over hills and mountains, led by a child. This is no ordinary incident. Oh, you're quite right, Mr. Zhongli. We should have our wits about us. That's not all. Our scholar was attacked by Geovishap hatchlings, but the level of aggression they exhibited was unusual. We have encountered many clues along the way. So far, they've pointed us in the right direction. The miners headed in the direction of Nantianmen the day before yesterday. From here, they would have had to navigate a perilous mountain road. If their destination is indeed Nantianmen, we should be able to catch up with them. Great! No time to lose! I left a mark in the vicinity just now. If Uncle Dai does pass through here, it should guide him to us. Clever thinking! A classic Zhongli move! मुझे पता नहीं क्या करके क्लिक हो गया तो इतनी टैक्सी पन्नों पिंग आती है ना नो नो तो भी अबे यार यार वो अच्छा म्यूजिक है भाई जो इनका वो है ना नया वाला ये जो बजाता है गिटार सुमेरु का जो तार से जो बजता है बढ़िया है There's भाई a वो basket lying here भाई too. एक दिन मैं बोर हो रहा था This बैठ must के be मैं one उस of पे the डेस्पेसिटो miners. बजा रहा था ये अलग शौक है Judging by ये his अलग appearance, शौक है he must have collapsed from मैं कसम से exhaustion. बोर हो रहा था बैठा बैठा कुछ था ही नहीं कोई करने के लिए ये टारगेट still किस पर आ रहा पता नहीं भाई वो कैरेक्टर नहीं लेके आया पहले मैं ना ऊपर को था एक इनका ये नहीं तो डेंडर It चिपकाने होते हैं seems that he thinks he still has work to अरे do. भुवन तेरे को एक्स्ट्रा वो मिला कोई Something's not क्या right. कहते हैं There's a जो camp जियो को nearby. लगा We should take him there and monitor his condition before deciding our next move. पता नहीं मेरे पे एक्स्ट्रा पड़ा है मेरा मैक्स आउट हो रखा है प्लीज तो नहीं है ऐसा होता तो नहीं चेक करो जरा यूट्यूब हम तो करेंगे तुम्हारा तो तुम करोगे गूगल पे सर्च कर लो ना इज देयर एनी एक्स्ट्रा जियो जेनशिन How is he? He won't die, right? He's worked himself into a stupor. Thankfully, he's not in serious danger. मेरा पड़ा है लेकिन भाई दिखाओ ग्लिच हो सकता है यार मोस्ट ऑफ ऐसा हो लॉजिकली देखेगा तो यूज क्या हुआ उसका पता नहीं किस चीज में और यूज में हो जाए 380 से जेनोसिस बना रहा हूँ अपना कुछ भरोसा नहीं वो नो हाँ इसका लिखा हुआ है जेनोस इसका लिखा है थोड़ा देयर आर थोड़ा ज्यादा होगी इसका लिखा है देयर आर मतलब देयर आर ऑल ऑन द ओवरवर्ल्ड व्हिच वन इज एक्स्ट्रा इज जस्ट व्हिचएवर यू ग्रैब लास्ट हैं क्या मतलब
मतलब कि ऐसे सारे ओवरवर्ल्ड के अंदर ही होते हैं पर एक एक्स्ट्रा रहता है ऐसा बता रहा है। फिर इसको एक्स्ट्रा ही मिला है। तो मतलब मैंने सक्सेसफुली सारे कलेक्ट कर लिए। चौड़ा होगा। अरे उसके अंदर मिला था कोई, मैं वो कर रहा था क्वेस्ट वगैरह। वहाँ कहीं मिला था मेरे को कंचुअलॉजी। Paimon heard him talking about digging for something. Did he dig himself into this state? It's certainly a possibility. It looks like there's something in his pocket. Are these ore fragments? फालतू में ही बचा रहे होंगे भाई। जेनोसिस वाला आइडिया I बुरा just भी नहीं है। witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine. He's one of the 4 that we're searching for. How he came to be here is what we need to understand. बट यार मेरे को यहाँ पे पता नहीं स्टोरी लाइन में जेनेसिस की बात ही नहीं है अभी तक। Abandoned here. अभी तक नहीं हुई ना, लेकिन दे तो रहे ना सर। लॉन्ग ने तो दान में दे दिया लगभग। Unless something happened. वेंटी के तो चाटे मार के लिया जेनोसिस। Something that led him to fall behind. Paimon's had enough. This is too mysterious. Oh, अबे वो wait a backstab हो moment. जाता है Seeing वरना these तो fragments has jogged my memory. I have something for you. What is it? Ooh, is it a present? Something आराम से for बिना us? से इग्नोर करो। As I mentioned, before I met Uncle backstab हो Di, जाता है I तो was in ज़्यादा a बंदे होते daze. After setting out with you on this case, it feels like a fog is lifting. I was so happy when Uncle Di enlisted you to help. I would never have managed to track down these clues by myself. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily जेनोसिस से rare. पावर नहीं जाता, सिर्फ One for each of इमॉर्टैलिटी you. जाती है शायद। A memory, if you will. तो जेनेसिस इमॉर्टैलिटी चली जाती है तो रेडन की तो है। लॉन्गली की गई और नहीं रेडन के पास भी नहीं है उसका जेनोसिस, उसने उसको दे दिया था। याइमिको को दिया था, याइमिको ने फिर उसको दे But दिया of course, स्टारमोस को। take it. 6th And this हार्बिंजर। one is for Mr. Shangli. लेकिन रेडन शोगन का पपेट। Huh? Is something wrong? Not to your liking? On the contrary, I just hadn't anticipated लेकिन receiving वो a gift कहते हैं कि during वो the थोड़ा current धोखा दे सकता है। circumstances. But हार्बिंजर। thank you. I will take good care of it. I'm pleased you like them. It's nice to be able to give a gift that others can appreciate. Oh, I see more rocks over there. You should all get some rest. I'm going to scan the surroundings. Perhaps there are more memories to uncover. You sure like rocks, huh, Kunjun? Ores are the crystals of the earth, the sediment of time itself. जो भी है ना I feel at peace among मकोतो them. करके वो Get होती है some पहले rest and call me when you're ready to set off. I फिर won't be वो far. शायद मर जाती है, पता नहीं कुछ होता है तो किसी को कुछ नहीं पता चलता। Rest easy. फिर I उसी surveyed उन्हीं the दोनों को area. पता होता है कि दो There's no रेडन danger शोगन here. टाइप है। Oh, तो however, there is फिर ए something I बन जाती है wanted to रेडन discuss शोगन with you. और वो पपेट बनाती है फिर What's अपना with the seriousness all of a sudden? दो या तीन। Does Dragonfall mean anything to you? एक वो होता है ना ब्लूप्रिंट टाइप You mean the ore that Kunjun's looking for? What's so special about it? क्या ब्लूप्रिंट है? Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Dragonfall, on the other hand, is formed as a product of elemental reactions. लेकिन धोखा दे सकता है। Elemental reactions can produce material objects? Indeed, they can. अरे वैसे भी However, उसने जेनोसिस बहुत सालों पहले only a छोड़ दिया था। minority can survive for long periods of time. उसको जरूरत ही नहीं है। Dragonfall first emerged वैसे ही in the बहुत midst OP है। of a great battle, thousands of years ago. Powerful clashes of elemental energy gave birth to elemental crystals. When the fighting ceased, these geological remnants were miraculously preserved. अब वो विजन खत्म करने लगती है। And yet they are crystal जब हम creations जाते हैं all ना the तो same. थोमो का विजन Few and खत्म far कर रही होती है between, तब तक। कर ही दिया relatively होता है। unknown. फिर ट्रैवल A few hundred years ago, they were virtually mined into obscurity. Why is it then that a citizen of Lior now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? स्टोरी ऐसे खत्म होती है कि तुम सिग्नोरा को मारते हो, फिर रेडन शोगन को समझ आता है कि हराम है ना, तो उसको वन स्लैश मारती है।
Paimon doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Return show Kunjun, होगा ना God whose of Eternity. motivations for seeking it are unclear even unto himself, it's practically unheard of. Ulterior motives? Is he a villain? A conclusion that is presently impossible to reach. We must watch and wait. Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. As for anything else, sooner or later the tide will reveal the lie of the land. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, call Mr. Kunjun over to us. We still have more investigation ahead. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does find the camp, he'll know what to do. मैं मेरे कैरेक्टर से ज़्यादा की हेल्थ नॉर्मल अपोनेंट पे लगती है तो लगा ले 36,000 के 2 ही दे लिया वो घटिया का हो नहीं तो वो फ्लावर ही होता है बेसिकली अलग अलग फायरों का भी होता है छोटे वाले Kunjun, we need to get going. No problem. I'm done here. Any results, Mr. Kunjun? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. बहुत particle generate करती है लेकिन. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. क्या है? कुछ तो कह रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया. Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. बोल यार ड्रामा मत करो. जो बोलो भाई. So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Don't Let's give keep a going. fuck. Damn. तेरे को बताओ 3 आरा नारा होते हैं छोटे 3 बिंदु से तीनों के अलग अलग तीनों की फोटो लेने से भी वो मिलते हैं मोर ले ली रेड ग्रीन ऑरेंज येलो 4 या 5 होते हैं ये 3 ही होते हैं रेड ग्रीन और नहीं 4 तो मेरे को पता है भाई 3 के मैंने लिए थे और मतलब मैंने एक वीडियो देखा था उसके अंदर उसने किसी और का लिया था रेड ग्रीन ऑरेंज और येलो ये 4 तो होते हैं मैंने 2-3 के तो लिए हैं बाकी ये बताएं Perhaps. All हो right. जाएगा होना होगा तो 3 के तो लेने होते हैं उसका तो खाली मिशन है बाकी होते टोटल 4 हैं शायद 4 या 5 Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Paimon's gonna look over इना there. तुम मत एक्सप्लोर कर ले सुआ. It's worth a try, surely. Let me see. मैं पहला फॉर्म निकल मैंने नहीं करा This is तो मेरे तो अभी आएगा ही. अबे यार यूला आएगी नेक्स्ट वाले में तो यूला खोलूंगा मैं. हुआ just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. Not. वो तो करूंगा ही. Whatever. Paimon's going to investigate over there. If you don't try, थोड़ा क्या रखा है समझो मैं. Oh. You think so? when has Paimon अबे स्ट्रीमर देख रहा था. Wait a minute. बहुत चेहरा है भाई वो बंदा. All right. लोग उसका लक बहुत तगड़ा तो लोग उसको अपना अकाउंट दे देते हैं खोल करने के His लिए. voice came from behind the tree. Did he find another clue? और उसने पिछली बारी पता क्या क्या था Let's अगर go see. Maybe he found पिटी another इतने थे miner. तुम्हारे पे प्राइमो या फुल थे और तुम्हारा 50-50 हार गया तो 50-50 जीतने तक के वो और डालता है पैसे तुम्हारे अकाउंट में. भाई मैं भी अच्छा करेगा लेकिन फुल इकट्ठा करके देना होता है उसको मिनिमम. भाई इकट्ठे करके दो भाई मैं भी खुलेगा अपनी स्ट्रीम पर
50 to 60 अराउंड और 10 पिन होने This चाहिए has मतलब been ये होना newly चाहिए कि भाई हाँ dug. तुम्हारी पिट्टी लग It रही would है, appear our ये answer नहीं कि is हवा up में भाई ahead. पिट्टी लगवाने के तुम That voice coming from the ऐसे नहीं, tunnel. तुम्हारा कटने Someone चाहिए, else go कटने के बाद first. हेल्प कर देगा तुम्हारी। Compose yourselves. I will lead us in. There is an unusual नहीं कटा तो कुछ presence भी नहीं होगा। emanating from inside the tunnel. Prepare yourself. तो तुम्हारा वैसे वो तो खुलेगा ही कम से कम 5 स्टार। हाँ बंदों ने आयाका के लिए इतना बचाया थे, उनका नहीं खुला हो तो आयाका obviously का खुला। रीरन मुश्किल है ना, लेकिन आएगा तो अभी नहीं। होगा ना। हाँ हुताओ का भी आएगा, हैलोवीन अपडेट में आएगा। The missing miners are here. What are they digging for? काजुआ का भी वैसे ही I'm आएगा, afraid that this ऐप whole बता दी tunnel इवेंट is the fruit of their strenuous labor. आइलैंड वाला जो था वैसे ही आएगा, काजुआ वगैरह का भी। Digging a मोना तो tunnel to परमानेंट this बैन ancient कैरेक्टर sea. ही है। Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere until the gate. So behind the seal, मस्त है यार। मना तो करेगी ना, ये कहती है ये पर चढ़ाने लगी। क्या ही बोलूं, ऐसा तो कोई भी कैरेक्टर नहीं है सर चढ़ाने लायक, बोलना कोई मारना। अरे ये सब छोड़ दो, फिर इनकी लोकेशन बता लोग, 2 चाबियां पड़ी है 80 प्राइम। कुछ नहीं, वो कर रहा था क्वेस्ट वगैरह कर रहा था तो उसमें निकल गई। और भाई क्या स्टोरी दिखाई है यार कसम से। प्रॉपर स्टोरी नहीं दिखाते, मतलब बात होती है समझ में, बात समझ होती है, सको लेकिन तो समझ लो। जब पूरा वो स्टोरी दिखाते ना कि एलिब्रेशन में पूरा, वो बड़ा सही दिखाते हैं। वो तो है भाई अजदहा आ गया मेरे सामने। भाई भुवन जो एनर्जी रिचार्ज का पीस था ना भाई, तब से वो 2 बार रिट्रेटर हो चुका है और 1 बार एचपी। Lorax, you arrive at my doorstep of your own volition. Excellent. Taking revenge for sealing me away will be all the easier. So, the little girl is your power incarnate. But if you recall, Ishtaha, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. एक बार एक डैमेज रोल हो जाए ना, लेकिन होना तो भाई ड्रामे खाएगा। Cowardly insects! अरे श्राइन की लोकेशन बता दो यार कोई। Crumble! Crumble! 15 sands, no help the mountains gather! There is no atonement for 1,000-year pain! एक ड्रैगन फाइन Solidify!
Solidified. हेलो The enraged earth will not absolve you. Stabilize. This is order. ओ भाई कुछ डैमेज पड़ ही नहीं रहा भाई इसको कैसे मारूंगा हाँ तो है Gather. Crumble. Off we go. Dodge this. Be crushed. ओ भाई 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 Solidify. There is no. Is once not enough? You would forsake me again? If that is what you choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. Gather. Rise. Solidify. Oh, so sorry. Wind, hear me. Off we go. Fisher. Freeze! Stabilize. Let's light it up. There is no atonement for 1,000 years of pain. Everybody stand back. Freeze! Order guide you. Gather. Let's light it up. Stabilize. Out of the frying pan, into the fire. Rumble. Shifting Teamwork is dream work. not the mountain's permanence. Quake. The enraged earth will not absolve you. Nice and spicy. Gather. Don't get frostbite. Yeah, adventure time. Off we go. Adventure time. Stabilize. अरे भाई बैनी का बफ नहीं आ रहा यार ये मजा आएगा ना ब्लू Morax, you think you can destroy me? भाई ने थोड़ा ढंग का डैमेज किया कितना लेवल का है वो 71
Let's light it up! Cool it! Solidified! Fisher! Boba, get them! Going in! Freeze! Crumble! Rise! The enraged earth will not absolve you! Crumble! This is order! Quake! Nice and spicy! Let's light it up! Off we go! Adventure! भाई ये भी बोल रखा है क्या मैंने? Gather! Come! Experience an eon of suffering! Teamwork is dreamwork! Dodge this! Freeze! This world will be frozen! Crumble! There is no atonement for 1,000 years pain! Stabilize! From solidify to dust, sooner or later, you'll be crushed. Crumble. Stabilize. Let's light it up! I will have order. भाई finally मार दिया? हाँ Morax. 1,000 years after you sealed me underground, you return for the second time. बाप रे You should call it by its name, Ashtaha. Fate. Fate? कोई नहीं होता है Fate? पहली बार ही सबके साथ यही होता है. So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to ravage the अच्छा wilderness. अभी इसको हमारा अभी तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा ना स्टोरी चल रहा है क्योंकि वापस मारने आएंगे भाई इसको You have forgotten. हाँ रिवॉर्ड थोड़ी मिलेगा उसको तो पागल हो रहा होता है वैसे तो उससे पहले जाते हो. Huh? Kunjun? Morax. It's been a while. You're... Ashtaha. The very same. During the battle, you imbued us with your power. Yes. It was all I could manage. Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon reaching this tree. Allow me to elaborate. I am not Ashtaha the whole, but a fragment. Heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider the existence of me and the Ashtaha you see there to be a reflection of such polarities. We are a schism of the will of Ashtaha. So there are two Ashtahas? No, it can't be. That's impossible. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child.
With this new identity, you were able to vent about the forces that suppressed you. But would anyone listen? Would they even care? That's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. Your plan was to launch an attack on both ends, from outside and within, thereby fully destroying the seal. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax, and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity and ancient dragonkind. Morax, do you want to tell the tale? There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Then allow me. Ajdaha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax, with a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the Earth is no more or less than the Earth itself. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But as time passes, so these memories fade into obscurity. Erosion is the world's greatest destroyer of memories. Erosion ground Ajdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. Ajdaha, now incomplete, became irascible, aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm, why you waged war against Morax. In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. We lost all reason. Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. And so, we became you. And from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Ajdaha and Morax. You can hate me, but you cannot deny me. No!
No! I am the remnants of Ajdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further, a willingness to coexist peacefully with mankind. No, no! It is I, Ajdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans that decides. I will not swear allegiance to this insect. Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. If you are the memory of the earth, then I am the memory of coexistence. Of coexistence with humanity. All powers under heaven rise and fall of land and sea. A star appears within the wild. A sun ascends as bright as jade. Strange. What is this feeling? And all this? You are spent, and I will soon disappear. Before I do, heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. Even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't, but it remains an inevitable misfortune. More axe! The little girl vanished! Are you satisfied, Ajdaha? I had to make amends. Satisfaction had no part in it. So, Morax, you call yourself Zhongli these days? I do. Well, I'm afraid old habits die hard. To me, you're Morax. As you please. I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes, from Morax to Ajdaha. This, I will remember this. Your power is nearly spent. Ah, perceptive as always, my friend. Shall we get going, you and I? Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going. To fix the damage left in your wake. Straight down to business as always. Let's go. चलो भाई कोई दिक्कत नहीं
we get here? We need to go back and check on the miners. So there you are. My men and I found your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent at the campsite unconscious. It seems he'll be okay. Sadly, we found no trace of the other three. Huh? Young Kun, what is... Nothing. Pay it no mind. Those 3 miners are over there, in that cave. Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, thank you, all of you. I better go and see how they're doing. So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Can I come with you? No problem. You rescued my men. I'll be happy to assist all of you in any way I can. I'll be back soon. I need to assess their condition. Kunjun, we should be calling you StARk. You're coming back to Liyue Harbor too, right? Not I. Merely this body. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. It would be a shame for someone of his talent to go missing. You always did have a great admiration for blacksmiths. Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Perhaps empathy is mankind's proudest achievement after all. StARk, I am no longer the Geo-Archon. I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that I won't be awoken a second time. No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. I ought to be here to witness their rise and fall. All life is shaped and then ground away by the endless flow of time. You were always the strongest among us. Yet, it would seem that even you have been eroded. That's unimportant. Fate is ordained by heaven. Even if our mission had already concluded, it would be cowardly not to strike out on the road of departure. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time, those people, those past and future relationships predetermined by fate, they will be waiting for you. I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. Were it not so, you would have killed me long ago, and would not be having to face me again now. You've brought a smile to my face. When all is said and done, a reunion between old friends is an auspicious occasion. That day in the chasm, did you hesitate? A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Liyue. You chose justice, but did not forsake your kindness. You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away.
The movements of the Earth Dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my full strength, I struggle to confront you, let alone seal you away. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact. Old friend, God of contracts, I hereby honor our agreement. Thank you, Ashtaha. My life is nigh on eternal. I will go on with the infinite flow of time. And you, Morax, you too will live for many a day to come. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. Yes. Don't be alarmed. He's only asleep. Whoa. That was so weird. It was like he suddenly became another person. In fact, we have yet to meet the real Kunjun. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago remain crystal clear in my mind. In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo-life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Ashtaha was. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes, quicker than words could tell. Lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds! I agreed to let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. A 1,000 years ago, Ashtaha attacked the chasm. I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail, down the length and breadth of the mine. Finally, I brought him down, and sealed him underground. During that battle, Dragonfall was born. Ashtaha could sense the stone. Subconsciously, he wanted to use it to find me. Despite being the victor, I could not claim to be stronger than he, and in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me, towards Liyue, towards life above ground. He was willing to be sealed away,
But as the erosion set in, he forgot. Even I cannot avoid it. But there is something I understand better than most. When the door opens, it is time to leave. The greater the power, the greater the danger erosion may bring about. The millennia may come and go, but even a stone may tire. Personally sealing away an old friend. This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the erosion imposed on me by the heavenly principles. That I was a god of mankind. My identity may change, but my eyes will bear witness to the history of humanity. You still care a lot about Liyue. Call it part of my duty. I must thank you both. No worries. Oh? About what? Oh yeah, Paimon nearly forgot. So, not long ago, we met a guy called Dane. He told us about Conria and the punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for. Zhongli, you're a god. You've lived through thousands of years of history. Surely you experienced the incident? I cannot say. Why? You can't even give us a thread of information? This is so important to us. I understand. But I must apologize. This is my contract. You mean another past grievance? Like the incident with Ejdaha? Too painful to talk about? It was signed before it all began. I have always honored the contract. And kept my silence. How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But as the god of contracts, I cannot go back on my word. Would you be ready to find out? It appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past, many secrets that lie hidden. They have been eroded by time, forgotten by the people, abandoned. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, everything has meaning.
do hope the Knights of Favonius are all working hard. चलो भाई देखा जाए भाई कौन कौन ऑनलाइन है। डार्लिंग भाई आ जाओ। It's time to move on. We shouldn't stay here. भाई पहले StARk को ही मार के आएंगे। कहाँ गया ये वाले डोबर में ना? नहीं 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 कैसों के ऊपर है ये रहा। StARk को भी साथ में नहीं मार सकते क्या? कूपे में नहीं होता StARk? Okay, okay, got it. Got it. बुला ले रहा भाई 2 मिनट रुको। और कोई मिशन बाकी है क्या? अरे मेरे को दिख पड़ेगा ना। मिशन तो ही बहुत सारे हैं भाई। अभी सब करना है भाई। स्पाइरल एबिस 5 to 3 ये बाकी है भाई। स्पाइरल एबिस करना पड़ेगा यार। I do hope the Knights... आज वेपन असेंड करने के लिए मटेरियल्स मिलेंगे ना? क्या ट्यूसडे इसका क्या इसका ट्यूसडे है? ओके इसमें वही चाहिए मुझे। वेडनेसडे का है।
ट्रेडिशनल वेपन है यार, कोई मतलब नहीं है इसको एनहांस करके, रिफाइन करके। The Favonius are all working hard. Onwards! We have work to do. It's time to move on. We shouldn't stay here.
do hope the Knights of Favonius are all working hard. Onwards. We have work to do. तो भाई अभी अपना एक्सप्लोरेशन में और क्या क्या बाकी है? एक्सप्लोर करने ही चलते तब तक अपन, तब तक ये लोग आ रहे हैं, मैंने बोला था। इधर तो नहीं है, इधर में एक शायद वो होता है एनिमोफिलस, कहाँ पर होता है आई डोंट नो, बट कहीं तो होता है। ये मेरे को अभी तक मिला नहीं भाई, मैंने सर्च किया था, ये वाला पानी के नीचे है, इसके लिए मेरे को क्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं कर रहा था लेकिन भाई वो पता नहीं अभी भी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये भी भाई अंडरग्राउंड है, इधर के सारे जितने बच्चे सब अंडरग्राउंड ही है भाई, ये सब ढूंढने पड़ेंगे। ये क्वेस्ट करना पड़ेगा भाई एक दिन मेरे को बैठ के, वर्ल्ड क्वेस्ट, तब जाके होएगा ये सब अंडरग्राउंड है एकदम, कोनों कोनों में दे रखे हैं, देख रहे हो? भाई आ जाओ।
पहला सब बंद ऑफलाइन बैठे हैं। हाईएस्ट लेवल है कोयोमी का कुकोमी, फिर 58 मैट्स का आता है भाई। मैट्स का 60 हो जाने वाला है भाई। आया का Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? मैक्सिमम एचपी 30,000 देख रहे हो भाई। Toodaloo. Toodaloo. एलिमेंटल पावर पर होता है। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सब कैरेक्टर को समझना पड़ेगा पहले। डैमेज 62%, उसपे 10% का क्रिट रेट। ओ भाई मेरे को देखना ही चाहिए भाई, मेरे को देखना ही चाहिए भाई। और किसका फिनिक्स भाई अभी ऑफलाइन चले गए हैं। रानी भाई का चलो आ जाने दो भाई इन लोग को पहले, फिर भाई अपन देखते हैं। ओके ये हैंग आउट इवेंट्स हैं। नहीं भाई मेरे को 3 दिन बचा है यार। क्या करूं? ओ
ओ भाई जंगली का बैनर आ रखा है और मैं पुल नहीं कर सकता हूँ। अगर अभी पुल कर दिया तो मेरे को गानी नहीं मिलेगी। मैं किसी को खेलना है तो आ सकते हो साथ में, अपन बॉसेस मारने जा सकते हैं क्योंकि मेरे को अभी रेजिन यूज करना है और मेरे पास अभी रेजिन पड़ा हुआ है। I do hope the Knights of Favon. और मैंने अभी अभी एजदा को मारा है तो फिर भाई एजदा को भी एक बार मार के उसका रिवॉर्ड कलेक्ट करना है। फिनिक्स भाई जय श्री राम बोल के कर दो। अरे यार मन नहीं कर रहा है यार, मन सा नहीं हो रहा है। Are all एक तो तू working मैं जय hard. श्री राम बोल के तो फिर काट देगा भाई मेरा, तो मतलब नहीं है। The vision hunt. Did something bad happen again? आ जाओ ना फिनिक्स भाई। हाँ आ जाओ, एजदा को पिल के और मैं वहीं चला जाता हूँ जाके बस। आप आओ सीधा वहीं पे। यो बीरो वेलकम बैक। हेलो 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 क्या हो भाई, आवाज आ रही थी क्या? ओके आ रही आ रही आ रही आ रही, आ जाओ। नहीं आ रही भाई। आ गया आ गया। It's time to move on. भाई जहाँ We shouldn't stay 70 here. लेवल का तो मर जाएगा, 90 लेवल का भी मार देता हूँ मैं, बट वैसी बात नहीं है। अबे 90 वाले में वो जान खाता भाई। मैं अभी गया था मारने। वो जब धम धम करता है ना, उसका डैमेज पड़ने से ज्यादा लग रहा होता है। तब जोंगली की अब स्टोरी वो में सोच भाई, वो झेल जाता है मेरा बॉम्ब भी। भाई फिर जोंगली बोलते है हैं कि आप बॉम्ब लोगों के पास, कम से कम वो झेल ही लेगा, उसको झेलना ही पड़ेगा। इतना भी नहीं झेलता। तूने तीनों पीसेस लगा दिए उसके टेनेसिटी? 4 4? 4 पीस करेगा अरे इंटेंसिटी। अरे बाबा, 3 पीस मतलब एचपी के, मेरा मतलब ये है। 2 Onwards. पीस लगाने We have मैंने। work to do. क्यों? अरे तो क्या करूंगा, इतना शील्ड बॉट प्रॉपर बना देंगे, बाद में जियो डैमेज बोनस लगा रखा है अभी फिलहाल। तो टेनेसिटी को तो 2 ही लगाए ना, 4 पीस में वो बफ भी करता है। मेन तो वही एडवांटेज है टेनेसिटी, वरना कुछ भी लगा लो। ए बे क्या फर्क पड़ता है भाई, ज्यादा ही होगा तो मेडन बिलफ लगा दूंगा 2 पीस और 20% और एचपी। हीलिंग बोनस देता है वो मैं शायद, पता नहीं। सीलिंग बोनस देता है ये। I do hope the Knights of Favonius are उसका all 4 working पीस hard. इंक्रीज कर देता है क्यों या बर्फ पे। पड़ा है, रुक। हीलिंग एक इनकमिंग। पीस पड़ा है मेरे पे। पढ़ क्या है? हाँ ये, अबे वो तो हीलिंग इफेक्टिवनेस 15% वो आया था, हीलिंग बोनस कह ले। वो मैं समझ ही गया था, हीलिंग बोनस का होता है वो। भाई जीन को जैसे दी ना एक बंदे ने मेरे को, जीन देख के मजा आ गया था। अब मेरी जिन देख के मजा आ जाएगा भाई, रुको रुको टाइम। जीन देख के मजा ही आता है। अंदर काहे नहीं जा रहे? अच्छा अभी तो तुम्हारा हुआ नहीं है ना 45? हो रहा है 90 का नहीं कर पाओगे। ये मारेंगे भाई सब, पकड़ पकड़ के भेजेंगे। बेनेट बोनेट रखना तो बेनेट बोनेट रख लो, वरना तो ठीक ही है, ये भी ठीक है। स्टार्क हीलर है तुम पे दोनों, ठीक है तो बचाना मेरे को। इसीलिए रखता हूँ भाई। डार्लिंग भाई भी आता तो यही करता भाई, पीछे खड़ा हूँ, बफ दे दूंगा, हील दे दूंगा, आप मारते रहो। जाओ उसके मुंह पे जाओ।
एनिमेशन आएगी तो ओए वैसे इनको ज़ॉम्बी को घूम डिफेंस तो नहीं देना होता ना? अबे डिफेंस के साथ भी वो बहुत तगड़ा वो बन जाता है बहुत उसकी नॉर्मल एचपी नहीं गिरती भाई पता है मैं देख रहा था वही बंदे ने लगभग बहुत तगड़ा डिफेंस दे रखा था उसको तो उसमें वो ऐसे रेडन चोगन के थप्पड़ों में पेट रहा था ना कोई फर्क ही नहीं लग रहा था उसको तो वो तो ज़ॉम्बी को वैसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा ना, बट ओवरऑल फायदा है। ये जहाँ पायरा ब्लॉक करने वाला है गाइस ओए होए 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 होए। Why do they never miss? ये पीछे पे आएगा ना गुस्सा दिलवा रहा है बट जिस पीस में चाहिए ना मेरे को एचपी बढ़ा उसमें एचपी बढ़ा है। भाई अब अटैक भी नहीं हो रहा। भाई गेम का पायरो मत लगवा देना अपने डैमेज होगा बहुत ज़्यादा भाई Off we go. Off we go. फिर सबकियाँ मारना शुरू कर Swear देता by है my sword. Barely a scratch. You stand upon your tomb, though you know it not. मर जाएगा अरे इसके ना पार्ट होता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको मारने में Glorious and beyond of suffering. Whirling snow. Teamwork is dreamwork. Do not overdo it. Take flight. मारोगे मार लो लास्ट पे जाओ मार लो Let's light it up. This is just my. वाओ एक एचपी है भाई एक एचपी भाई मार दो यार हाँ बढ़िया मेरे को गाली दे रहा हूँ पता है अटैक में मोरैक्स कह रहा मोरैक्स तो अपना कायरो डैमेज बोनस पे क्रिट रेट मिला मेरे को। अरे आज तो वो आए होंगे ना भाई सारे के सारे कहाँ गए अपने एसेंशन के। हाँ ये डोगन में जाके आता है भाई रुको। 34th। Let's go। आजा फिनिक्स भाई। अच्छा मेरा बैनेट डाउन है। फिनिक्स भाई कहाँ चले गए? अरे आजा कचरा फेंकने गए थे भाई गाड़ी वाला आ गया था पूरा पूरा गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब बताओ कौन सा बॉस मारना इनवाइट किया ना मैंने आया नहीं। अरे मैं उसमें था क्या कहते हैं एजडा वाले उसमें ही था बाहर आके वापस।
दोबारा भेजो इनवाइट। कौन सा है ये वो है वेपन एसेंशन के लिए मटेरियल मिलता है ना उसमें। मेरे को लगा कोई तगड़ा बॉस मारने जा रहे हो। आज ये सब करूँगा मैं वेपन एसेंशन के लिए, और अपने इसमें वो मिल जाएगा ना मेरे को टैलेंट लेवल अप के लिए भी खेलेंगे आज। खेलो खेलो खेलो, बढ़िया है। अरे अरे माय स्पेशलिटी। अरे क्या चल रहा है भाई? एक साथ इकट्ठा करने की देरी होती है बस। अरे भाई Hear me. Going in. किस चीज का मेरे को समझा नहीं पा रहे तुम। फैंग होता है ना, फैंग होता है, क्या होता है? ग्लेडिएटर होता है, फैंग होता है, बताता है। हाँ फैंग, वुल्फ क्रैक टूथ। क्या चीज है? मेरे को भी समझ नहीं आया, कर क्या रहे हो तुम लोग? पता नहीं, मेरे को भी नहीं समझ आया हैक कर क्या रहे हैं ये। बता रहा कौन सा? वुल्फ क्रैक्ड टूथ। जूम इन कर रहे हैं किसी टैलेंट्स वगैरह का मटेरियल के लिए, जैसे बुक्स वगैरह होती है ना, ऐसे कुछ होता है। वो भी होते तेरे, क्या कहते हैं उसको। इसमें मेरे को क्रैक्ड टूथ मिला अभी। इसके लिए भी चलते अच्छा हैं क्या? ओके, एलिक्सर, समझ गया। एलिक्सर मिस्ट ये मिलेगा ना यहाँ पर। चलो ये तो बहुत सारा लेना है भाई, इसको 2-3 बार खेलना पड़ेगा। अरे वीकली बॉस मारते हैं चलो। वीकली बॉस तो मार दिया ना। 3 मार सकते हो। अरे पर वो तो मार दिया मैंने, मतलब कल मारे थे चाइल्ड को और वुल्फ को, दोनों कल मार दिया था। चाइल्ड मार दिया। हाँ वुल्फ रिटर्न को मार शोगन दिया खोल था। ली। एक और उसकी बारी होता अभी है ऐसा। स्टोरी हुई है, अभी फाइट हुई, पूरी फाइट नहीं हुई है। रेडन के 2 होते हैं आई गेस। हाँ अभी उसकी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। It's हाँ time to उसमें move जब on. दूसरी होती है ना, We उसके shouldn't बाद stay रेडन here. से लड़ाई करनी पड़ती है। हाँ रेडन बढ़ते हैं। बेसिकली रेडन से लड़ाई नहीं होती हमारे, उसके बॉट से लड़ाई होती है। आई मीन आय होती है एक्चुअल जो बॉस होती है, और जो उसका पपेट होता है उसका नाम होता है रेडन चोगन। तो हमारी जो एक्चुअल कंट्रोलर होती है आई होती है, बीच बीच में बॉट है ना बीटी देता है आय को। तो अबे नहीं सुन, मैं बताता आय हूँ। और रेडन बैठती हैं। जो रेडन शोगन है ना, वो एटर्निटी के लिए गॉड बनाई थी उसने, ताकि उसमें ऐसे रूल सेट कर रखे थे पपेट। कि हाँ, अरे वो तो मतलब स्टोरी जो क्यों भी है। बता रहा है, स्टोरी खराब कर देगा भाई। सही है सही ओ है। अच्छा, ये नहीं बताना था क्या? तेरे को बीटी को आई बोला थॉट था। सिप कर रखा है, मेन बताना है। ठीक है। खेल लो। हाँ भाई। कुछ आना वाना तो नहीं आया? ठीक। अरे भाई ये कर रहे थे भाई, हेलो तुम्हें ही मारना पड़ेगा ऐसे। करायो से करायो क्या मारूंगा। Let's light it up. तो वहाँ पे
इतना लोड आया था ना बेचारे पे। Everybody stand back. अपने आप से होता है, हो जाता है मेरे पास। Let's light it up. Off we go. कॉपीराइट नहीं जा सकता है, जाने में कोई कॉपीराइट नहीं है, तू बस गाना बजा नहीं सकता उसका कॉपीराइट। हाँ बेसिकली देखा जाए तो कायदे से उसका वही करना प्रमोशन। My apologies. इसमें एक एक की बुक मिलेगी क्या? लो लेवल पे एक ही मिलती है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा अमाउंट जैसे जैसे ओ दो ज़्यादा मिले ज़्यादा जरूरत। भाई नाइस। सारे पे हो गए इसमें भी। कंटिन्यू कर रहा है इसके अंदर अभी। मेरी भी हेलो 22 हो रखी है, 23 होने वाली है। आरपीओ और बॉय की कितनी हुई भाई बैटल पास वालों की? बैटल पास वालों की हो गई 26-27 हो गई, पता नहीं 27 भाई मेरे 27 होगा हुई है। प्रीमो आज हो जाएगी, 28 हो जाएगी अभी 1019। थोड़ी देर में। कितनी हो जाएगी? है कैरेक्टर चेंज नहीं किया? बहुत ही बढ़िया। Order got. Adventure time. इतना ज़्यादा लगता है कॉमेडी का क्यों? पूरा ईटी गिरा है मतलब स्टेरॉइड ही गिरा है पूरा। खड़ा होता है ना तो उसके यार तो आसपास ही फिजिकल वो डैमेज तो मार बड़ा डर लगता है। Let's light it up. Going in. तेरे को ये पता है कि एक्चुअल जो इलेक्ट्रो का आर्कॉन कौन मतलब नाम क्या होता है उसका? बाल करके नाम होता है इलेक्ट्रो आर्कॉन। पपेट होता है। अरे भाई अबे नहीं, जब वो बताता है ना रॉन्ग भी बताता है कि मैं जाओ करके वो बोलता है कि बाल करके आर्कॉन है इलेक्ट्रो का। अब उसको लोग लेकिन रेडन बुलाते हैं और वो शोगन लगता है तो इसलिए रेडन शोगन बुलाते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्यों बुलाते हैं उसको। मेरे को लग रहा था बाल उसका बॉट होता होगा दूसरा। नहीं ऐसा गोंगली के बहुत सारे नाम हैं। रेक्स लैपिस मोरल दो दो 4 हो गई 6। और एक बार आप लीव करके मैं वो करता हूँ तो फिर कैरेक्टर चेंज कर लेना। एक ही है वैसे भी 2 मिनट के अंदर तो ही रहा है। भाई शाव बड़ा ओपी लगता है जब भीड़ आती है ना चढ़ती है शाव से खचा मारता है तो। बाय द वे नई वाली जो तू बता रहा था डेंड्रो वेपन जो था कैसे बनाने का, क्या करना उसको? वाईटी चेक करो ब्रो, मैंने भी नहीं बनाई। ओके इसकी भी भाई अमीनो का आगे ऊंची चीज बड़ी हुई ना, मैं नहीं करने वाला। पामगल बैठ मेरे ख्याल छोटी ही है, ज्यादा नहीं है भाई, वो तो बहुत ही बड़ी थी। वो तो पता नहीं भाई, यहाँ जाओ वहाँ जाओ करते कराते पता नहीं 10 लोगों से तो बात करवाई थी इन लोगों ने। नहीं और क्या भाई।
अब जानवर का करूँ काम 10 ऊपर 20 भाई भाई ये क्या है? ठीक है भाई, ये भी ठीक है। प्राइमो दे मिर्ची भाई क्या पड़ी है भाई? बकवास में चाहिए। Off we go! Let's light it up! Stabilize. Order kite. ना हेलिचल डाउन कितना मस्त लगता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई। जहर लगता हो जैसे घूम रहा होता है जंगली करके। रुकने कॉल करके आता हूँ अब मानी से मीटिंग नहीं हो रही है। भाई मैं लिटरली थोड़ी देर के लिए कॉल पे गया, मैसेज करता अंबानी जी से मीटिंग ये वो बानी तू की जहाँ की मीटिंग जगह है। है ना गया ठीक है। हाँ तो अभी मैं चलता हूँ सीधा मॉन्स्टेड। किसको किसको कुछ मेरे को लेवल अप करना था, इसका टैलेंट बढ़ाना था मेरे को। अरे कहाँ चला गया? कौन है? अरे कंडेंस्ड का आ गया मेरे पास। क्या था? हाँ वो ल्यू से कंडेंस्ड था ना, मेरे रेजिन। को लग रहा था मॉड सेट से है। मैंने और एक बना लिया। है क्या हो गया भाई? हेलो नहीं हो भाई। Dingy person calling someone। कौन था? हेलो तो भाई पामगल वामगल हो क्या आप? भाई बोलते ही नहीं भाई। बोल ही रहे हैं हम तो। फिर पहले आवाज नहीं आ रही थी भाई। किसका सर्वर है यार इतना घटिया? मेरा है भाई। तो देख लो किसका कला दबाना। मैं तो कुछ कहता नहीं भाई, गला दबा बात कर। There is no in between। I do hope the Knights of Favonius are all working hard. अरे चाबी पड़ी है क्या श्राइन ऑफ डेथ की? कहीं की भी। दो है शायद से मेरे पास, नहीं एक ही है, इलेक्ट्रो की है। किसकी है? इलेक्ट्रो की। अरे इन वहाँ की समझ गए भाई। सिंपल बोलो भाई, ये थोड़े लूज बंदे हैं, शब्द समझ आते नहीं। ओवर एग्जैजरेट आवाज नहीं कम करना आ होता रही है क्या? भाई। आनी भी चाहिए, कम ही आनी चाहिए। बैनी किधर गया? अच्छा ये रहा बैनी। Onwards. We have work to do. पीछे यार भूल यार तो इसमें जलते क्यों हो यार? जलो मत, बराबरी करो भाई। तो अपन को भी एक बार इधर जाना पड़ेगा। यहाँ Oh पे my ना God, ट्रेजर precious उसको पेलना है। तो ले लो यहाँ से आके। इधर आओ, प्रीशियस दिलाता हूँ। क्या क्या क्या? प्रीशियस चेस्ट दिलाता हूँ, इधर आओ मेरे पास। प्रीशियस चेस्ट, एक मिनट। प्रीशियस मैं नए वाला इवेंट नहीं, इसमें आधा काम तो काजो ही कर रहा होता मेरा। और कुछ भाई? कुछ भी होता है या तो ग्रुप करके मारना काजुआ होता है है भाई, वरना ब्रोकन। काजुआ है भगना होता है। ब्रोकन भाई। तुम 100 का क्रिट डैमेज कर दो, थोड़ा सा क्रिट दे दो और 1000 ही अब है। और क्या ही चाहिए उस बेचारे को? हाँ टैलेंट थोड़े क्राउन कर सकते तो कर दो। ईएम के बाद भी जो ज्यादा
कुछ नीड है नहीं, बट वो हो जाता है ऐसे निकालने वाली बात है। निकाल लो ना, निकाल दो मेरे को, ऐसे भी इतना तगड़ा करता है। What a pleasant surprise. सोच रहा हूँ जीन के लिए मेडल और काजुआ के लिए एलिमेंटल मास्टर का बीच इकट्ठे। पागल हो क्या भाई, जीन ना अच्छा हील दे देती है अगर सुस्ते देना भाई। ओए कहाँ जा रहे हो? हीलर है। ऊपर जाना है, वो तो खोल दिया मैंने। ऊपर ही आओ, ऊपर आओ। इसको सामान करो और ऊपर जाओ और वो लो इलेक्ट्रो कूलर। यहाँ पर है ना श्राइन, ये तो मैंने मार्क कर रखा है। एक मिनट, इसको ओपन करा है नहीं करा है? ओपन किया हुआ है। हाँ मैं भी उसी की तलाश में आया था, बट मैंने वो नहीं, ये वाला ओपन किया नहीं करा। ओपन ओपन नहीं करा हुआ है। अरे मैंने मार्क करके रखा है ना, कौन सा ओपन कर रहा है कौन से नहीं। अरे देख लो नहीं कर रखा है मेरे में दिख रहा है, वो ब्लू कलर का शेड आ रहा है। नहीं मैंने मार्क करके रखा है। जो नॉर्मल है वो श्राइन लिख रखा है, और जिसको ओपन कर रखा है उसमें ओपन श्राइन लिखा है। इधर आओ, नहीं खोल रखा, क्यों बहस कर रहे हो? अच्छा ये वाली बात कर रहे हो क्या? वो पीछे वाला बता रहा था मैं। फेनिक्स कह रहा दिखता है तो दिखता है, ठीक है। ओके थोड़ा क्या भाई? हाँ वो आगे दिख गया मेरे को। भाई 43 आज ही हो जाएगा। वो क्या भाई 43 बज रहा है भाई। मैं उनको कोई टेक्स्ट करो भाई कि हम डिस्कॉर्ड दोस्त हैं। तुम्हारे स्ट्रीम भी नहीं देखता भाई, कितना दो बड़ा दोस्त बात रखा भाई तुमने। बारिश रुकना शौक है कुछ? प्राइमरी निकल जाएंगे। प्राइमोजन से ज़्यादा एक डोमेन खुलता है, वो ज़्यादा देता है 30-40 तो वो भी देता है। तो माय नॉलेज अल्लाह अल्लाह का लिखता भाई, क्या हो गया? ना इधर आसपास में 3 इलेक्ट्रोप्लस है, बट किधर नहीं पता। अरे एक आपको पता शील्ड होती है बड़ी अच्छी, मैगू खाने की उधर ही होती है, और उसमें से मिलते हैं 300 लगभग प्राइमर से निकाल ही देता हूँ इन टोटल घूम फिर के। 3-4 अचीवमेंट होते हैं, एक डोमेन होता है, शील्ड होती है एक। मैं बताता हूँ कौन सा आइलैंड है। एनाजोमा का जो मैगू खाने के राइट वाला तारस सुना करके जो वो है ना आइलैंड, सारा सुना करके प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, तो दिख नहीं रहा। यार नीचे साइड में आओ तो कहाँ गए फिनिक्स भाई? फिनिक्स तो बारिश भी रुकते फिर। ये राइट दिख गया इलेक्ट्रोप्लस।
वाईफाई भी हो गया भाई मेरा बेस ये सब Two minutes please, okay? अमानिया कोला ये क्या बोल रहे भाई कौन सी लिपि बोली अभी भी तुमने लिखा है 2 मिनट मैंने बोला अम्बानिया कॉल आया अच्छा अंबानी का कॉल तो आ ही रहा है भाई फीनिक्स को हल्का समझ रहे थे यार भाई सोचो एक वो था मैंने कहा पक्का से उसमें 2 जगह एचपी था एक तो नॉर्मल परसेंटेज में था और एक नॉर्मल एचपी था फ्लैट एचपी उसमें अटैक रोल हो रहा बैठ के जिसमें नहीं होना चाहिए भाई जोंगली बिल्ड करना भी ट्रिकी है बट गान्यू बिल्ड करना ज़्यादा टफ है तो कोई सीन नहीं है भाई आप लोग हो ना अरे आपका रेजन लगता था मेन तो रेजन बचा लोगे तो बढ़िया रहता हमारा जब 45 हुआ था हम पे 30-35 रेजन तो पड़ा था फ्रेजाइल हमें एक दिन में 10 उड़ा फर्क उससे भी कुछ नहीं पड़ता क्योंकि हम उड़ाते थे आर्टिफैक्ट पे क्योंकि हमें लगता था भाई आर्टिफैक्ट बढ़ा देते हैं गलत टैलेंट से प्रायोरिटाइज करा ही नहीं कभी लेवल 1 के टैलेंट होते थे कैरेक्टर मारते ही नहीं था 20 का आर्टिफैक्ट के साथ के बाद से थोड़ा फोकस करके करा तो पता लगा टैलेंट भी बढ़ाने होते हैं कितना गिराना है वो मिला है मिशन आजो डालेंगे अब भी आ जाओ और रुको मिशन कर रहे हैं मिशन पूरी हो जाए और अब तक कहाँ से बोलते जोंगली के शिप पे गए हो हाँ जोंगली का शिप जो होता है जोंगली का शिप अच्छा वो ल्यूए के पास में जो था वही ना हाँ अलग से जो खड़ा हाँ होता है हाँ तो वो तो अभी मिशन उसका किया एक चैप्टर मिशन किया ना मिलता उसका तभी दोनों उसके अंदर हो गया I do hope the Knights of Favonius तो are all वो working मिशन अब hard. जो कर रहा हूँ मैं मन तो वो नहीं हो तो रहा था स्टोरी के अंदर है जहाँ तो ना वैसे जोंगली की स्टोरी के अंदर है वो तो सबसे बाद जो करना होता है वो सिंपल वाला हाँ जिसके बाद में ये खुला है अभी मेरा अज़ा हाँ सोचो मैंने अभी तक नहीं करा वो हो गया थोड़ा सा ही था एक्चुअली जाके मेरे बात करनी थी मिशन डिस्क्लोज मतलब क्लोज करना था हेलो यप आ गया था मोदी का कॉल करनी और बातचीत क्या भाई ऐसा मारेंगे ना पकड़ पकड़ के अरे यार वो विक्रांत से पेपर अपने नाम करने गया था यार तुम चुप रहो ना यार तुम्हें क्या पता तो चुप रहो यार मैं बताओगे नहीं तो पता ही नहीं कोई बताया तो
और इसका मेरे को वो बताओ कैसे बंद करूँ बारिश। इधर भी किससे बात करना पड़ेगा? Play the rhythm of great in front of Silpana. Enter the groove and train. Silpana कहाँ था यार? वैसे इनुजुमा की रैंक बढ़ाने से अच्छा है समेरू को बढ़ा लो पहले। मेरे को तो कितने सारे वर्ल्ड कश के हैं। मैं वही कर रहा हूँ अभी बैठ के। तो बहुत ही कर लिए। 1000 प्राइम जोड़ लिए। धीरे धीरे जोड़ ही रहे हैं। तो बढ़िया। पहले लॉन्ग का थोड़ा टोरा सा था क्या? हाँ लॉन्ग भी लॉन्ग। जब से रीरन में आया ना सबको मिल गया, उसके बाद से गए हैं शील्ड बॉडी पे हीलर रख लो। फिनिक्स ये है फिर क्या? भाई इतना होम पे क्यों है? तुम्हारा रीजन बचा है या खत्म? मेरा अभी कितना, अभी मार के है ना सबको, तो ये अभी अभी कितना 12-13 बचा था। मेरा भी 16 ही बच रहा है यार। मिशन क्या है? बॉसेस मारने में थोड़ा मजा आने लग गया बस। ओही है ओही। चलो टीपॉट बना के देखता हूँ। थोड़ा टाइम से खोले हैं टीपॉट। सारा गैजेट कैनॉट भी डिप्लॉय यार, क्या इशू होगा? मेरी रैंक चल रही है 8 तो अच्छा। चार से तो कम ही है। 45 बॉटल्स पड़ी हैं भाई।
आज तो शायद जल्दी बंद कर दूंगा इसलिए भाई वो बाहर जाना है मेरे को। Don't stand too close to me. Everybody stand back. एक सेकंड आवाज नहीं आ रही। कितना बजे तक फिर भी? अभी बंद कर दूंगा थोड़ी देर में। 12 बजे के आसपास तो निकलना है 12 साढ़े 12। फिर कितने जाओगे? ये तो शायद से 3-4 बजे आ रहा है। शाम तक देखो यार। Let's light it up. ऐड कर ले फ्रेंड लिस्ट में विटामिन विल मैन वेलकम टू द चैट बडी। लो भाई तुम्हारी आईडी देखे पहले। कौन है? इविल माइंड वाइट। अरे 9351 लिख दिया मैंने। 8351 Oh, ow! Where did that come from? Evil mind. Nice. फिर हेलो बोलना है बस। फिर से हेलो बोलने हैं बस। Let's go find some treasure. Nice. कैरेक्टर्स अपन बाद में देखेंगे ये भी थोड़ा सा जल्दी में। रीसेट पोजीशन। अरे इसके नीचे कैसे जाएंगे? अच्छा खुला है पहले से। एक्सप्लोरेशन तो मैंने भी नहीं करा अभी, पता है काफी सारा। अच्छा ये रीसेट का है। ओके ओके। पोपड़े में खड़े हो क्या? हाँ बोल दिया। अच्छा इससे वो बदल जाएगा। भाई बाय 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 बाय। आओ नीचे आओ, नीचे वाला खोल। ये वाला इससे खुलेगा लेकिन उसके नीचे वाला और किससे खुलेगा? सुनो तुम नीचे रहो, मैं खोल देता हूँ। ओके। करना क्या बात? ओह मैं नहीं कर सकता। पजल टाइप पे मुझे भी। इससे वो बंद हो जाएगा। मैं चला गया नीचे तो मैं मार दूंगा। अरे डोंगरी के अंदर डाल दिया भाई। छाती पर नीचे वाला खोलो, सबसे नीचे वाला। मैं मुंह पर मार रहा हूँ, तुम पता है 2 वाली मार दी। इसके बाद कौन सा खोलूं? भाई अभी लास्ट तुक्का लगेगा, ठीक है? ये है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस ब्लॉक हो जाएगा। कहता पहले ये वाला किया था, फिर ये किया था, फिर ये वाला। इसमें भी लॉक हो रहा है। बस अब एक। ओके 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 ये वाला डोर। मैं तुम सबसे नीचे वाला खोल सकते हो तो खोलो ना, तुम नीचे आने की कोशिश ना करो। नीचे आ रहे तो नहीं खुल रहा ना, बाकी सारे खुल जा रहे हैं। कुछ तो होगा।
यार एक छोटी सी बात बताओ, ये सेरेनिटी टी पॉट पे लिखा था मैक्स रेलम बाउंटी, इसको रिसीव कर सकते हैं? कैसे करते हैं, क्या है ये? बस अभी वो लास्ट वाला मेरे को नहीं पता चल रहा उसको कैसे खोलना। सारे ओपन करके देख लिए? हाँ सब करके देख लिया। हाँ अरे ये भाई नहीं इग्नोर कर रहा है क्योंकि हमें भी नहीं पता। सब करके देख लिया। एक पजल है, कैसे सॉल्व करेंगे ब्रो? अगर तुमको पता तो बताओ। फिलहाल तो मेरे को बस उसमें वो करना है, फ्रेजाइलिज्म खरीदने तक का वो करना है, चाहे रिपोर्ट में ट्रस्ट रैंक, उसके बाद भाड़ में जाए एक बारी में करेगा उसमें। और कुछ और करके इसको मैं बाद में कभी बैठ के करेगा। वैसे भी अरे भाई खोल निकलना दो, बस पड़ेगा एक मेरे ही को। करता भाई, एक खोल दो ना, तुक्के उक्के मारो अरे वो थोड़ा हो नहीं, जाएगा। तुक्के के अंदर नहीं हो रहा ना, अपन किसी और को पुल करेंगे ना तो ऊपर वाला बंद हो जाता है, नीचे वाला खुल जाएगा, ऊपर वाला बंद हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। सबसे नीचे वाला खोलने का ट्राई करो ना, बस एक बार वो खुल जाएगा तो हो जाएगा। सबसे नीचे वाला खुल ही तो नहीं रहा है। कुछ तो होगा, देखो। पहले रीसेट कर लेंगे। 6 चाहिए बस। रैंक उसके बाद ट्रांसिएंट रीजन खुलता है फिर। देखा बंद हो जा रहा है वो। और एक ही बार पुल कर सकते, उसके बाद अपन को रीसेट ही करना पड़ेगा। इसमें कंटिन्यू ट्राई ब्लॉक कर करना है। दिया भाई तुमने, मैं तो ऊपर भी नहीं आ सकता। मुझे दे रहा हूँ। देखा बस अब एक रुको रुको, स्टार्टिंग से सारे करता है एक बार। हाँ कर दो, लॉक कर दो। लास्ट वाला फिर भी नहीं बोला। लास्ट वाले का सीन क्या है समझ में नहीं आ रहा, वो अपने आप ही खुलेगा। देखो ना जरा कहीं यूट्यूब करो, कौन सा कर लो यूट्यूब। मतलब क्या रह जाएगा? सर्च पता क्या करना, सरपेंट हेड पजल आई जाएगा कुछ ना कुछ, जेंशिन इंपैक्ट। आ जाता है, ये आ जाता है। भाई तब से ना 2 बारी मुंह में मार चुके मैं। नीचे दिख रहा भाई, खून फाड़ रहा हूँ, पिटेगा नीचे चले जाएंगे। भी डायगोनली ट्राई करता एक बार। हो गया, वो खुल गया, डायगोनली भी हो गया। सीधे सीधे मैंने खुला, डायगोनली ट्राई किया तो हो गया। और एक्सीडेंसी उसको बोलती है, को बोलते हैं कि लोग किसी उसको भी देख तो मैंने उसको भी बोल दिया। सिंपल टोम पढ़ो, ये सब क्या लिखा है। क्या आ रहा है, कैन नॉट सबमिट आइटम्स इनको। अरे इधर आओ, एक और है यहाँ पे, इधर आओ इधर आओ। कैन नॉट सबमिट आइटम, इधर आओ ना, इधर भी है एक। अरे वो स्विम करके जा रहा है। हाँ आ जाओ। ओके तो बाकी अच्छा नीचे से निकले अपन। हाँ कर दो उसको, टेस्ट मिल जाएगी। अरे इसके अंदर भी कुछ पजल रहेगा यार।
पजल नहीं डालेंगे तो इजीली नहीं हो जाएगा भाई। ले वो पिलर ही गायब कर दिया। मैं तुझे पिलर खोलता हूँ। तेरे को क्या प्रॉब्लम है साले? भाई मेरे को लीसा लगा दो भाई, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा मत करो फिर, ये वाला मैंने भी नहीं करा था। फिक्शन ट्राई करता हूँ। मैं कागज नहीं बनाई ना अभी तक। एमिनोमा कागज। वाओ, यहाँ पर भी होगा। अरे इधर आओ। किधर? एक मिनट है। पत्थर ढूंढवाता हूँ, जरा आओ जल्दी आओ, मेरे पे आओ ऊपर। सामान कर लेना वो झाड़ से ना, फिर ऊपर उड़ते उड़ते आ जाओ। देख पा रहे हो मेरे को? नीचे से ही लेके आओ कि ऊपर है सामान करने के लिए? नीचे से लेकर आओ ना, तभी तो ऊपर आओगे फटाफट। आओ तो उड़ते आओ। मैं तो सीधा पहुंच गया था, पता नहीं क्या कर रहे हो। अब यहाँ सामान करो। अभी आ नहीं रहा। कोई नहीं, जरूरत नहीं, आओ इधर आओ जल्दी आओ। ये कलेक्ट करो। Oh, the sun's out. बाकी तो इसमें कुछ होना नहीं। This meteorological transformation is most splendid. Like a felicitous twist of fate in the face of certain doom. चलो एक बबल फोड़ना। किसी ने ऑब्जर्व किया अथीना की इंग्लिश अच्छी हो गई बहुत, जब उसने पहले खेलता था उससे। छोड़ो भाई, मेरे को तो बात नहीं करनी। तो माइक अच्छा हो गया। इधर आना भाई तुम। आया चेस्ट हो गया। अरे छोड़ दो, बहुत टाइम लगेगा। 2-3 प्राइम What trinkets lie veiled within this desolate plain? इधर आओ, इधर नीचे। ये बबल देख रहे हो? ये बबल फोड़ना है तुमने। हाँ। तेरे को और एरिया के बारिश हो गई। Thundering retribution. इधर आओ, स्टार्टिंग में Times ahead. That and main Fräulein's laundry is still alive. What? Seriously? ये वाला है मेन। इसको सेट करना है आपको इस वाले पे, इसमें मैं जा रहा हूँ। इस वाले पे या तो सामने वाले पे। आज नहीं आ रहा। किसकी हाइट किसकी ज़्यादा है? सामने वाले की हाइट ज़्यादा है या इस वाले की हाइट ज़्यादा है? हाइट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब सबसे हाई है, फिर उससे नीचे, फिर उससे यही है। आया उस तक मेरे साथ आया ना? हाँ आ रहा है। अब इसको उधर भेजना है, वो वाले पे, नेक्स्ट वाले पे, सामने वाले पे। उसके बाद वो सामने वाला जाएगा
भाई मारने मत जाओ यार, हो जाएगा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ना समझ गया मैं। फिर हमने गलती करी है। उस वाले को ना, सुनो, उस वाले को इस वाले पे सेट करो, मेरे ख्याल से तब हो जाएगा। नहीं, वहां तक वो डायरेक्शन उसकी जाएगी नहीं उधर तक, वो बीच में रुकेगा ही नहीं, या तो उस डायरेक्शन पे रहेगा, इधर आएगा। पक्का है? हाँ वही पक्का होगा है। फिर। तो फिर उसी वाले को एडजस्ट करो, मैं वहां से मारता रहता हूँ। ऐसा यूट्यूब पे देख के कुछ कर लेगा मैं फटाफट। अरे मैं समझा, एक सेकंड। इस पे जाएगा। नहीं जाएगा तो उसी वाले पे मारो भी एक बार। मैं कह रहा हूँ ना, वो ऊंचा लग रहा है मेरे को, ये थोड़ा नीचे है। जाएगा और सामने वाले पे जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं। पर उसका इस वाले को करो, इस वाले को इधर आओ, मेरे पे आओ। ये वाले को पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जा रहा है। मेरे वाले पे आओ, उस वाले को करो, उस वाले को। एडजस्ट करो ना। अरे इसको हटा भाई पहले यार। क्या हटा दे? अरे यहाँ साइड में भी है ना एक, तो शायद से नहीं है क्या? पता नहीं। नहीं है तो वो है 7 सेट नहीं हो रहा। देखो अभी वो उसके तरफ डायरेक्ट मुड़ गया, देखा सीधा उधर था और उधर से इधर आ गया। बढ़ाना थोड़ी, ऊपर उठाना उसको। अब उठ जाएगा, सबसे ऊपर ही जाएगा। तो बहुत ही ऊपर ज्यादा आ गया। नहीं इसी पे जा रहा, तो इसी पे रहने दो फिर। अरे हाँ सही कह रहा था वैसे तो, थोड़ा सा इधर आओ, उस वाले को उस पर सेट करके आ जाना। उस वाले को उस वाले पे करो, सामने वाले पे। इस सामने जाएगा ही नहीं वो। इस तरफ वाले पे नहीं जाएगा, इधर देखो जिसमें मैं गया। नहीं किस पे? ट्राई तो करो। और किस पे जाएगा? नीचे गए हो क्या? इसी पे आ रहा है, नहीं किसी और पे जा ही नहीं रहा है ना। या तो फिर एकदम ही उस साइड भेजता उसका, जिस साइड मैंने बताया था वो स्टैचू है, स्टैचू की साइड से डायरेक्ट इधर आया वो, उसके बीच में कहीं रुका ही नहीं है। वो किस पे रहा है? वो सामने वाले पे नहीं हो रहा हमारे हिसाब से। वो तो जान चाहिए पत्थर कहाँ से आ रहा है बीच में। रुको जरा ट्राई करता हूँ। इंस्टेंट नहीं होगा, सारे हिट होने चाहिए। उनका लूप बनता है बस। एक बार मारो, आ जा रहा है। इस पे जा रहा है तो फिर बहुत बढ़िया है। हाँ गया ना, उस पे गया, वो सामने वाले पे गया। हाँ वो सामने वाले को ना, नहीं सुनो, उस वाले को छोड़ दो, वो सही बैठा है। उस वाले को छोड़ दो, वो सही बैठा है। इस वाले पे जाओ जिस पे ये था सामने वाला, जिस पे लास्ट लगा बहुत। लास्ट लगा तो उस वाले पे सेट करो। ऊपर है और ऊपर वाला। हाँ ये वाला है ऊपर वाला। इस वाले को ना मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे सेट करना, या तो इसी वाले पे कर दो, ज़्यादा ऊंचा लग रहा है मेरे को। इसको नीचे वाले पे सेट करना, इस वाले पे ही।
ये क्या कर रहे हो? अरे इस पे आया ना, इसके बाद वहां जा रहा तो उसको इधर सेट कर दो तो नीचे वाले पे इस पे, और उसके बाद वो नीचे उसको वाले इस पे पे सेट ले करना है आएंगे। उसको। हाँ देखो जहाँ से लास्ट गया ना बॉल, उस वाले को नीचे सेट करना, नीचे वाले के कहाँ होता है? यार ऊपर जा रहा कर दिया उसको नीचे वाले पे सेट। मैं मारता रहूँ, मैं हूँ। देख रहा हूँ। जल्दी करो, वो उधर जा रहा है ना, बस नीचे ही करना है उसको, उसका एलिवेशन ही चेंज करना। नहीं एलिवेशन चेंज करके कुछ नहीं होता। एलिवेशन सही है तो होगा। ओह सॉरी, ओरिएंटेशन जो भी होता है। ओरिएंटेशन सही नहीं था। हाँ जो भी है, लेकिन फिर उधर से अभी ना, अब उसको खाली उस अभी कहाँ पेस्ट जा करना रहा है, है? उसको हाँ ऊपर अभी पेस्ट नीचे करना वाले को है। ना, हो गया उस वाले को करना है। मैं ऊपर जाता हूँ, तुम ये करो, नीचे वाले को सामने वाले पे करो, मैं ऊपर वाले को मारता हूँ। I created another universe. लास्ट वाला सेट नहीं हुआ है। हो गया लास्ट वाले को सीधा कर दो। अरे वो लास्ट वाला जिससे लग रहा है, अच्छा हुआ ना। हाँ जो बॉल हिट करेगा ना वो। मारो एक बार, देखा नहीं। आ रहा है ये। इसको सेट किस पर करना है लेकिन? बॉल पे करना है इसको। मारो एक बार। ओ भाई, अब ऊपर वाली बॉल को लेफ्ट कर लो। अब यहीं आसपास कोई टावर वावर होगा उसमें डाल देना, यहाँ पे भी डायरेक्शन हो जाएगी। भाई। टावर नहीं दिख रहा है, बहुत दूर हो गए हैं कहीं, लेकिन देख लो ऊपर एक बार टीपी कर लेता हूँ। वहाँ तो दूसरा वाला है ना। साला डरता है मुझसे भाई, जहाँ टेलीपोर्ट कर रहा साला वहीं पे मेरे को इलेक्ट्रो शॉट दे रहा है। एक वो है इलेक्ट्रोकुलस, दिख ही नहीं रहा। अरे मेरे को तो रीजन बचा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ना। कुछ थे वहाँ पर, मेरे को भी नहीं देखा। तो ये और तगड़ी जंगली की शील्ड कर देते हैं। साला कर रहा है भाई।
ज्यादा मारा तो मेरे पास भी नहीं है, 10 लाख ही है। वाली चीज है लेकिन रेडन शोगन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है कहाँ पर प्लेस करना है वो बॉल। अरे सुनो तो पार्ट 1 2 3 करके आ रहा हो और याद नहीं आ रहा मेरे को। क्या 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 एक वो होगा क्वेस्ट होगा वर्ल्ड क्वेस्ट होगा, देखो आ रहा होगा, उसमें नेविगेट कर दोगे ना तो आ जाएगा। बिजली खा के मर गया है और बात कौन तू कर रहा है? ऐसे भाई ले सकते भाई। क्या हो गया भाई? भाई भाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं यार। मरेगा मरेगा। मैंने इसका फॉर शील्ड। ओके ब्रो, आइडिया अच्छा है। क्या हो गया? अरे बिजली से मर गया था ना मैं, तो मैंने चेक में सोचा कि डायोन है उसके लिए शील्ड। कहाँ गई डायोन? मेरे पे आओ एक और बबल फोड़ क्या देख ले ना, नीले रंग की आ रही है बिजली बिजली। मैंने तो बोला ही नेविगेट कर लो सारे एक एक करके आ ही जाएगा। बिना दो मौके ही करना। सारे डेमन ये इसी को मारना है। इसमें मांगो करने की आता पता है लड़ने के लिए, मेरे साथ तो बड़ा भी नहीं आता। अरे आप किधर चले गए? मेरे पे आओ ना, मेरे पे आओ यहाँ पे इसको शॉर्ट सब। अब पता नहीं क्या सीन हुआ, मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी। मैं जब कैरेक्टर स्विच करके मार रहा था तो फिट जा रहा था, लेकिन जब मैंने सामने कैरेक्टर मारा ना दो कैरेक्टर लेकर गया था। आ जाओ भाई मेरे पे। क्या हो गया भाई? मर रहे हो क्या भाई? जहाँ पर वो बॉल प्लेस करने यहाँ पे ही खड़ा है गार्ड। भाई पिटते क्यों रहते हो यार, ऐसा थोड़ी चलेगा। भाई अभी सही नहीं भाई कैरेक्टर मेरे बिल्ड। नेक्स्ट में क्या करूँ? पिटना ही पड़ेगा। ना पिटो भाई, अभी थोड़ा पिट लो, बाद में जब रेजन आ जाएगा चावल आ जाएगा तब मत पिटना। आप ही 1 2 8 करके दिखा दो इसको। मेरे भी तो एक दूर करा से कोने में रहे हो।
भाई ये तो ऐसा मरने से नहीं आता तुमसे। अच्छा खत्म हो जाता है। अरे फायरों मत लगाओ बस अब। फायर नहीं लगा रहा। हमारा पता है कितना बिल्ड था शुरुआत से कि हम जब तक 55 नहीं हुआ ना तब तक तो कभी देखा नहीं ऐसे हार्ड लिखा था ना। क्या भाई औकात पार हो रही है ऐसा वाला। ठीक ठाक थे मतलब मार देते थे डैमेज डूमेज कैरेक्टर हमारे। और एक मिनट में सोच को भी सिर्फ ले 2 करके आया। कैरेक्टर से मारते मांगो करने के मैं भले पिट गया था उसके पहली बारी में। 2 मिनट आया। ठीक है भाई किक कर दिया भाई। अरे किक नहीं किया, मैं खुद एग्जिट कर दिया। सिंगल प्लेयर। I don't know. I guess तो था मेरे टाइम पे। क्या तेरे मांगो करने की तो मैं नहीं मरवाया सारे। देखो मैं अकेले मार लेता तो तू वो बता रहा था कि कहाँ से का लाइटें मारनी होती है। अरे इसके लिए ये मेरे को मिला तो था भाई। भाई मैं खुद अपना अकेले मारता हूँ काजुहा के लिए, उस वाले में ज्यादा डिफरेंस होता है क्या? छोड़ो भाई। फिनिक्स भाई देखो जरा, एक बार ये मिला था ना मेरे को, अभी तुमने बोला था उठा लेना, इसको उठाया था मैंने। तो उसका सबका अलग अलग होता है। ये है रॉक पिलर वार्डिंग स्टोन, और ये कौन सा है भाई? सबका अलग अलग होता है। उसका नाम ही नहीं शो कर रहा है, बताओ। अरे होते एक ही टाइप के हैं लेकिन सबका अलग अलग अपना अपना होता है वो। ये नहीं कि आप इसका उधर कर रहे हो। अच्छा तो अगर मैंने यहाँ से ये बॉल उठा ली है तो फिर अब मैं दूसरे एरिया के पिलर पे लगा सकता हूँ? बॉल शायद लग जाती है मेरे ख्याल से, बॉल का हाँ तो आइडिया फिर लेकिन दूसरे वो तो नहीं पिलर पे लगता। चला जाता ना मैं। कहाँ पर है दूसरा पिलर? इस साइड पर है ना। वेट अ मिनट, ये प्लेस करके मैं निकल ही जाता हूँ भाई। 12 बज गया, जाना है मेरे को। आज 7 घंटे का स्ट्रीम नहीं कर पाएगा भाई मैं। भाई वो गिर जाता अभी भाई। अबे इस पे भी वो भाई गार्डन ना बैठा है। साले तेरा मैंने मरवाया था तो झूठ बोलता है भाई बहुत ज्यादा। रहने दे भाई, रहने दे, छोड़ दे। बट काजुहा के लिए 50 लेवल तक करते तो मरवा। मैंने ये थोड़ी बोला कि तेरे से मरेगा नहीं, मैंने बोला मरवाया था मैंने। वो तो बाय चांस के बाद तो मेरे वर्ल्ड में था, किक करके करता तेरे को बुरा लगता, मैं तो कर लेता, मेरा क्या है। छोड़ भाई, ये इतना रूड आंसर कैसे दे सकता है भाई, करवाया था मैंने। अब भाई वो देख रहा हूँ भाई बात है खुद कि कर कर लेता उसमें, तूने हेल्प कर तो करा, बस तेरे को नहीं मेरे को काजुहा था ही, चलो चाहिए होता वो। छोड़ो भाई। छोड़ ये ही नहीं रखा रहेगा भाई, इसको दूसरे वाले को भी ओपन फिर करना ये पड़ेगा, यूनिक उसको को प्लेस गाड़ी नहीं दिखता है करना। भाई। ठीक भाई खुद कर। हुआ
छोटे यार इसको बंद करेगा मैं बंद कर रहा है अभी स्ट्रीम। जा रहेगा स्टार के भाई अचीवमेंट क्या है भाई? कंप्लीट जा डोमेन्स रहे क्या टुगेदर विद अदर प्लेयर्स 100 टाइम्स। ओ भाई 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 भाई। यप 100 बारी। हाँ। कलेक्ट क्या 15 देखो मेरा रीजनिंग कितना ये स्पेशलिटीज पॉइंट इन कितने हैं। अनदर प्लेयर्स। ये मेरे को जाके करना पड़ेगा। अब मैं भाई जाऊंगा क्या भाई रैंडम बंदों के वर्ल्ड में हाथ मारने। 72 टोटल आइटम उठा के लेके आ चुका हूँ मैं। मेरे को बस 18 और उठानी है। क्या 18 नहीं आइटम फिनिक्स दूसरों देख के वर्ल्ड से। तू मेरे वर्ल्ड में आ जा। तू कुछ मत करिए मेरे अचीवमेंट है मैं मार दूंगा। तुझे क्या कुछ करना वरना होगा। एफ जा मारना है कोऑप में। इग्नोरा मारनी है। रूइन सर्वर मारना और वही सब है। वरना छोड़ दूंगा था कहीं। मेरे को नेम कार्ड मिला ना यार। भाई इतनी पर्सनल ग्रजेस कैसे पालते हैं भाई लोग? छी भाई, अब हेल्प करने का मन भी नहीं करता भाई, छोड़ो। रैंडम के साथ कर लूंगा भाई। जानता ही नहीं भाई मैं। कौन फिनिक्स भाई? स्टार्क भाई आपका दोस्त है क्या? हाँ भाई जा बीजे में बकवास फ्रेंड है कर। भाई। रुक जाओ भाई, इसका फोन नहीं बंद करता हूँ, रुको। इसका वाईफाई बंद कर दूंगा मैं। हेलो फिनिक्स भाई। तो आपको 25 को बर्थडे ओके ठीक है। चलो रे बंद कर दो। चलो गाइस मिलते हैं अगली स्ट्रीम में। शाम बाय को बाय बाय। करूँगा सुबह करूँगा पता नहीं मेरे को बट आज शायद नहीं होएगा। कल ही मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय। I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you